Hello students. So in the last class, continuation same topic of the cell, I decided with you regarding the endoplasmic reticulum as well as the ribosomes and Golgi body also I discussed, but I think so the voice was not there. So we'll continue. I'll give you the outline for the Golgi body also, all the Golgi apparatus. And before starting, if I am making some kind of attempt so that you can also read it and get the information very fast, so please kindly like and subscribe my channel and also share it if with your friends if you really want to read the particular material. So coming back to the Golgi apparatus, as for Golgi apparatus, what are the Golgi apparatus? Golgi apparatus usually occur in form of granules, okay, in the form of granules, filaments, rod shaped structures, and it is usually present or they are usually present near the membrane. इस ऐसे अगर membrane present है, Golgi apparatus will be present near the membrane. Now where do, very important question over here, where do the Golgi body originate from? So we say the origination of the Golgi body origination is from ER. ये एक बहुत important question है. From where do the Golgi apparatus originate or originated? They are supposed to be originated from endoplasmic reticulum. Okay, ji. So small vesicles are present of different shapes, which are present usually. This is the nucleus. So we say that small cisternae, rod-shaped vesicles, these are present near the nucleus and they consist of numerous tubular structures with a membranous wall. These are called as cisternaes. Cisternaes, okay, tubular structure. ओके जी, टेबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. अब इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, दे आर ऑल एसोसिएट विद द माइन्यूट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. Vesicles also from together with the vacuoles. So we can say that it will give rise to the small vesicles as well as the small tube like structures. And in case of plants, in case of plants, the name given is dictyosomes. Dictyosomes, again very important objective type questions, and they usually contain the small and a scattered group of cisternaes and vesicles. These are different types or say elongations or modifications of the Golgi body structure. Okay, so what is the main concern function of the Golgi body? Main function of the Golgi body, हमने ईयर का बोला था बिकॉज ईयर में अगर राइबोसोम प्रेजेंट हो गए तो वो हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में. यहाँ पे गोल्जी बॉडी क्योंकि सिस्टरनेज और वेसिकल्स बना रहे हैं, सो वी से द मेन फंक्शन ऑफ इट इज सिक्रीशंस. सिक्रीशंस ऑफ द सेल. अब सेल का सिक्रीशन क्या क्या हो सकता है? इट माइट बी एंजाइम्स, इट माइट बी हार्मोन्स बॉडी के अंदर में सिक्रेट होते हैं. सो द हार्मोन्स एक्सेट्रा एज वेल एज वन major important that it act as a packaging and transport organelle. इट मीन्स दैट गोल्जी का काम क्या हो रहा है? पैकेज करके उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल. ओके जी, ऑफ cell. Okay, I think so clear from here that what exactly the Golgi apparatus or the Golgi body does. So then coming to the next, we'll take mitochondria, very important one and very interesting also. And one more thing regarding this Golgi body, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गई, that Golgi body is also called as, क्योंकि packaging और transport है, so it is also called as delivery system.
These apparatus act as a delivery system of the cell, क्योंकि पैकेज करके वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओके जी. देन कमिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ हाउ डू द माइटोकॉन्ड्रिया लुक इन अ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ओके जी. सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप ऑर्गेनेली को लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि वो डबल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है. सो वी से दैट इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, मतलब लेयर. ओके. डबल मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर प्रेजेंट है, एंड इन बिटवीन finger like projections are present. Finger like projections, these finger like projection is present. This is known as cristae. बेटा सिस्टर्ने और क्रिस्टे में कंफ्यूज नहीं होना है. Cristae is of mitochondria and cisternae is of the Golgi apparatus. Okay. So here some oxysome, आप higher class से पढ़ते हैं, F1 particles और oxysomes are present सब में. And exactly it is here various enzymes as well as they have their own DNA also. ये mitochondria की खासियत है. Okay. So various enzymes and various this secretion is the material is present which help them to release or form the ATP. So what we say about mitochondria, they are also called as the powerhouse of cell. Powerhouse of cell. Now why powerhouse? Because they help to what? They help to produce the energy which will actually stored here in the form of ATP, that is adenosine adenosine triphosphate. Okay ji. So what we say about mitochondria, that they are spherical rod shaped structure. कैसा है? Spherical and rod shaped structure present होता है. And what happens is they have a minute double membrane structure projecting inwards. These projecting inwards is called as cristae. Exactly what cristae is doing, जैसे हमारा हाथ का पाम होता है इस तरह से, और यही हाथ अगर ऐसे हो ज्वाइंट, तो एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, यहाँ सरफेस एरिया बढ़ रहा है ना. सरफेस एरिया इज इंक्रीज, so we say that it increase the surface area for the production. So here what is happening here, they are the site where cell respiration, very important, cell respiration occurs. Okay, it is a site for the, ऐसे लिख सकते हैं इसका function, site for cell respiration which actually occur to release the energy. ये हमने पढ़ा है respiration में भी. It usually what, at the end what happens is the energy release. So we say that this energy is then is stored in the form of, stored in the form of ATP. That is why it is also called as the powerhouse of the cell. So whatever the metabolic function is taking here, what is it, is all the energy is being by the mitochondria, as well as they store ATP, and though it is called as the powerhouses of the cell. बड़ा important, one more important function of it is, एक function हो गया site for the cell respiration, due to which the energy is released and stored in the form of the ATP. That is why whenever the metabolic activities energy is required, it is stored here and they get the energy from here. Very important, they contain their own DNA, contain their own DNA. Okay, they have their own DNA. So what is the function of the DNA? Body के अंदर क्या inherent करता है DNA? So which can replicate, which can replicate. So usually you know, एक और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है जो प्लांट में प्रेजेंट होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर बोथ आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस. दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस organelles because they can zooms, they can replicate themselves. So two organelles, one is mitochondria, other is the chloroplast. Okay,
ये मैं लिख देती हूँ, जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो भी आ जाएगा। Mitochondria. So they are also called as semi-autonomous. They can reproduce their own DNA and can replicate. Okay, so that is why mitochondria is important. I think so till here it is clear. Then we come to the next organelle पे आते हैं हम, which is the next organelle. और क्या क्या पढ़ा है आपने वो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे. हम आएंगे अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली में, दैट इज द राइबोसोम हमने कर लिया. देन कम टू द लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट वन. Lysosome. Now, what is the lysosome about? It is a small vesicle. छोटे छोटे वेसिकल होते हैं इस तरह से सेल में प्रेजेंट होंगे, स्मॉल वेसिकल. एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल वेसिकल की? दैट लाइसोसोम आर यूजुअली द स्ट्रक्चर्स विच आर फ्रीली प्रेजेंट. ओके, मेम्ब्रेनस है, सैक्स है, बडेड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडी, which get budded off from गोल्जी बॉडी. तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया गोल्जी बॉडी किससे बनेगा. आप बताएंगे गोल्जी बॉडी किससे बनेगा? ईआर से बनेगा, कमेंट करना. देन गोल्जी बॉडी, ईआर से गोल्जी बॉडी बनेगा और गोल्जी बॉडी से क्या बनेंगे हमारे लाइसोसोम्स. ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका. ठीक है जी. सो lysosomes have 40 different types of enzymes are present in it. Exactly वो क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं. इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी कि अपने आप ही सेल उसके अंदर जाके खत्म कर देगा या तो, और या फिर वो दूसरों को खाता है. क्या अब वो क्या करेगा? दे डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस. मतलब बॉडी के अंदर बाहर से कुछ आ रहा है, वो क्या करेगा? उसको पहचान के उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा कि दिस इज नॉट नीडेड इन आवर बॉडी. ओके जी. सो व्हाई दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज दी, क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स. ये हो गया जी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड एज दी सुसाइडल बैग्स. बिकॉज दे हैव बहुत सारे enzymes, many enzymes are present here, okay, which digest the foreign substances, and these damaged cells are then rapidly destroyed or dissolved by their own lysosome. That is why they are called as suicidal bags. Means they destroy the foreign substances, or we can say that many damaged cells. अब जो डैमेज सेल होंगे वो कहीं तो बॉडी में जाएंगे, are rapidly destroyed, are rapidly destroyed by their own lysosome. Own lysosome. So that is why they are called as the suicidal bag. Okay, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ. It consists of more of the hydrolytic enzymes. Okay, hydrolytic enzymes present होते हैं which help them to digest. अब ये क्या है, कहाँ पे लागू होता है, आपको कैसे पता चलेगा? बॉडी के अंदर कुछ ऐसे भी सेल्स होंगे ना जो खत्म हो रहे हैं, दे हैव देयर पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हुआ आरबीसीज. आरबीसीज हमारे 120 डेज में खत्म हो जाते हैं. सो नाउ व्हाट हैपेंस, वो कहाँ जाएंगे भाई? इट इज एंडिंग देयर पार्ट. सो वेयर द रेस्ट ऑफ द what we say that leftover substance will go, it will all be digested by the lysosomes. और अगर unwanted foreign bodies हैं बॉडी के अंदर में, lysosomes are ready there and it will help to digest that foreign materials. Then we come to the next one. lysosome के बारे में इतना ही. Then we come to the next one, that is the centrosomes. centromes या centrosomes या centrioles ले लेते हैं हम, क्योंकि इसका इससे कनेक्शन भी साथ साथ में हो जाएगा. Then we talk about the centrosomes and the centrioles. So coming back to the topic over here, centrosomes, the next topic we'll take is centrosome. ओके, अब सेंट्रोसोम का क्या काम है? वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. बेटा एक क्वेश्चन और आ जाता है
कि which are the organelles which are differentiating, or the name the organelles which are present either of the animal or the plant cell. So like centrosome is present only in the animal cell. Now what happens, centrioles इस तरह से present होते हैं and they usually act during the cell division. इनका काम सेल डिवीजन में ही है, स्टैक्स स्टैक्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे लकड़ियों की होती है ना बारिंग वैसे. सो वी से दैट सेंट्रियोल इट इज द रीजन विच सराउंड द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस. इसकी पोजीशन क्या होगी, लोकेशन प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस. अब नियर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, देन वी से दे आर टू वन और टू centrioles present. Okay, and these are surrounded by the radiating microtubules. Microtubules, ये जो बाहर रेज दिख रही हैं इस तरह से रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, विच एक्चुअली हेल्प और फॉर्म्स द एस्टर लाइक अपीयरेंस, ऐसे ऐसे स्टार जैसे ऐसे. यहाँ पे आप क्रोमोसोम से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ओके, ये पोल्स होते हैं अगर दो, आप पढ़ेंगे अगले क्लास में. सो what exactly is the function is, it initiates and regulate the cell division. Okay, and forms spindle fibers. इसको लिख लेते हैं हम, it initiate and regulates. What is the main function? Initiates and regulates cell division and help to form spindle fibers. Okay, ये हैं spindle fibers. So we usually say that the centrioles are this way present near the nucleus, and centrioles with the one or more centrioles. Centrosomes clear hai? I think so clear from here. What is the centriole over here? The lysosomes. What is the function of the lysosome? Then what exactly is the mitochondria all about? Structure कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन है कि रॉड शेप स्ट्रक्चर है. So this were the three, what we say, the three organelles more over here. I don't want to make a very lengthy one, छोटा छोटा है तो फटाफट देख सकते हैं हम. नेक्स्ट मैं इसमें इसी में पार्ट में मैं ले लेती हूँ प्लास्टिड्स को. ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं फिनिश इसमें. प्लास्टिड्स, क्योंकि सेंट्रोजोम मैंने वो लिया विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ओके जी, क्योंकि प्लास्टिड का क्या काम होता है, प्लास्टिड यूजुअली गिव द व्हाट कलर टू द पर्टिकुलर प्लांट. सो हियर यू आर द फ्रूट. हम बात करते हैं अब प्लास्टिड्स की. दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ओके, एंड दीज आर द स्पेशल organelle which are usually oval shaped, spherical or rod shaped structures. Okay, depending upon the color, on the basis of color, it can be divided into क्या क्या, leucoplast, 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 leuco मतलब colorless. Okay, so we say these are the colorless, gives no color. और बहुत अच्छा इसका function है that it store starch. और starch सबसे ज्यादा किस में देखा जाता है, हम रोज खाते हैं, these are the potatoes. Okay जी, then second, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट. अच्छा जी, अब बोलते हैं जी क्रोमोप्लास्ट बताइए. सो क्रोमोप्लास्ट आर दी कलर्ड पिगमेंट्स, यूजुअली व्हाट, येलो, ऑरेंज, रेड. अब जितने भी देखो फ्रूट्स बताइए आप, येलो कलर का कौन सा होगा, तो अगर वो येलो कलर या फ्लावर की पेटल्स अगर येलो कलर की या फ्रूट हो रहा है, these are all associated with these coloring pigments. For example, xanthophyll, name of the pigment, it is xanthophyll.
In the case of if it gives yellow color, okay, and it is orange reddish color if it is of carrot, it is due to carotene. Very important, ये important है जी. ओके, अब इससे रिलेटेड एक और है कि भाई जी बैंगन में किस तरह से कलर होता है. तो वहां पे वट एवर द कलर, द पर्पल कलर विच इज प्रेजेंट हियर, बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्लास्टिड, बट स्टिल इट इज कॉल्ड एज एंथोसाइनिन. पता होना चाहिए. एक ऑड वन करके क्वेश्चन भी आया था, उसमें जेंथोफिल कैरोटीन और एंथोसाइनिन दे दिया कि ऑड वन आउट बताइए. तो ऑड वन टाउन उसमें एंथोसाइनिन है बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द पिगमेंट, एंड what exactly is they remain dissolved in the cell sap of vacuoles and give red, purple or blue color to different parts. तो ये क्या कहाँ है, ये dissolved form में present होते हैं in the vacuole, in vacuoles. Okay, giving either purple, blue और रेड कलर. ओके जी, फ्रूट और वेजिटेबल्स में. तो क्लियर हो गया, ल्यूको हो गया और हमारा क्रोमोप्लास्ट हो गया. अब जो थर्ड वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इट इज यूजुअली ग्रीन पिगमेंट, है ना, ग्रीन करके ही पढ़ते हैं. विच गिव गेस, बचपन से पढ़ते आ रहे. ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है जी, क्लोरोप्लास्ट की वजह से. दे हैव द पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज, पिगमेंट का नाम क्या है, इट इज क्लोरोफिल. ओके जी, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड वेन एवर दिस क्लोरोप्लास्ट आर मेनली एक्सपोज टू द, जितना भी ग्रीन पार्ट्स है ना, एक्सपोज टू द सनलाइट होगा, तो ड्यू टू विच इट विल what this particular pigment is actually masking the lot of quantities of the chlorophyll inside them. So their function is to, what will be the function of the pigment, the function is to trap the solar energy, सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा. ओके, एंड एब्जॉर्ब, सबसे पहले क्या करता है प्लांट के लिए, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड शुगर. अब किसके लिए हो रहा है स्टार्च एंड शुगर, फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके जी, आई थिंक सो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट का आपको क्लियर हो गया स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. अब मैंने आपको पहले भी बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट, हैव देयर ओन डीएनए. it means that they can replicate and have the capacity, अपने आप ही बहुत सारे अपने आप को बना लेते हैं, capacity to divide. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है. ओके जी, तो यहाँ पे हमने प्लास्टिड्स की बात कर ली, हमने क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली. और अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, वो किस तरह से कलर दे सकता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. ओके, और ट्रैप करता है एनर्जी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डीएनए खुद क्रिएट करता है. दे हैव द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज थाइलोकॉइड्स. एग्जैक्टली अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ओके, इस तरह से इसका मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा भी कहते हैं. और ये लॉन्ग स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इस तरह से फ्रिट्स बोलते हैं इनको. ओके, एंड दीज स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड एज थाइलोकॉइड्स. एंड दीज थाइलोकॉइड्स कंटेन, ओके, ये थाइलोकॉइड्स जो डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज थाइलोकॉइड्स कंटेन द क्लोरोफिल. ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट वेयर, the thylakoid structure which is present in the chloroplast consists of the chlorophyll. So ये क्लियर हो गया हमारा सेंट्रोजोम से लेके प्लास्टिड. मेन ऑर्गेनेलिज हमने खत्म किए, अब हमने करना है न्यूक्लियस. ओके, टुगेदर विद द
granule wala part. So till here I think so it is clear. Do like and share. I want that like button to increase. Okay, thank you.